So, hello and welcome back. And today we are going to start with the trade union. I'm sure those who are working somewhere in a formalized organization, they must be aware of what is a trade union. Previously, we have seen that there is a conflict within the industrial relation, and to resolve the conflict there are certain techniques because conflict cannot be allowed to last forever. Because if that is the scenario, the industry would never work. If there is some like differences in the opinion or some demands are unmet, then there is a conflict and conflict should be resolved. And one of the technique was the collective bargaining, and that is done by the trade union. So, before independence, there was like union or group of people, if they like raise their demand or slogan against the company or the industry, it was treated as a criminal offense. Okay, it was treated as a criminal offense, and under the Indian Penal Code (IPC), it was termed as the criminal conspiracy. So nobody was allowed to collectively raise their demand against the industry or to strike against the industry for the fulfillment of their demands. But in 1926, a trade union act was enacted, which not only give recognition to the trade unions, but also removed the criminal conspiracy and give them the rights, that is the civil rights to the trade unions. So here we will see what are the trade unions, how it is registered, what are the rights of it, what are the obligations on it. Rights on it means what it can do, and what are the obligations on it means what it need to maintain for its existence. Okay, so trade union, basically if we see the basically the objectives of the trade union, so it is the major objective is to protect and promote the interest of the workers. Only for this reason the trade union is existing. However, with the development of the industries as well, the trade union has now become more of a political body rather than a body to promote and to protect the interest of the workers. However, like in some organizations, still the trade unions are very strong and they are dedicated for the protection and the promotion of the interest of the worker. So these were some of the trade unions in like which existed in all India level. That is All India Trade Union Congress (AITUC), Indian National Trade Union Congress, Hind Mazdoor Sabha, Central India Trade Union, Bharatiya Mazdoor Sangh, etc. So if we see for the trade union, for the registration of the trade union, see, for the registration of the trade union, if we see how many minimum peoples are required, there are minimum 7 members are required, and that is given under Trade Union Act of 1926, Section 4. How many members? Minimum 7 members are required. Now, minimum 7 members are required. That means any organization which are having more than 8 members can form a trade union, and this resulted in large number of registrations of trade unions. So then an amendment in 2020 or 2001, I guess, 2000 or 2001, and then amendment was made, and in it was added that apart from these 7 members, minimum 10% or 100 workmen, whichever is less, should be engaged in an establishment. Okay. So you have to remember 2 points. Number one is minimum there should be 7 members, and these 7 members must comprise at least 10% of the workforce. 10% of the workforce. Okay. That means now you should have minimum 70 members in an industry to form a trade union, because 10% of 70 would be 7. So both the conditions should be met. Number one, minimum how many members should be there in the trade union? There should be 7 members. And uh, in addition to this, that this 7 members should form 10% or 10% of workforce. Okay? 10% of workforce or 100 workmen.
whichever is less. ठीक है, 10% of the workforce or 100 workmen, whichever is less. If 10% is less in case of 7 members, then this should be taken. If 100 work, 10% is comprising, like if there are 10,000 workers, so 10% would be what? How much? 1,000. So this, in that case, 100 workmen, if agrees to combine and form a body, then a trade union could be registered. Okay. Now, apart from this, first of all, we have understood two conditions. Now let us understand in the trade union, what is a trade union? From the definition itself, there could be a question. What is a trade union? It it can be temporary or permanent. Just note down the keyword. It can be temporary or it can be permanent. First of all. Second, it can regulate relations between workers and employers, जिसने काम दिया और जो काम करते हैं, workers and employers, also between workers and workers. So if there is a question that trade union can regulate relations between workers and workers, that is also a true. Workers and employers is the primary role for which it has been formed. लेकिन वर्कर और वर्कर के बीच में भी रिलेशंस को रेगुलेट कर सकते हैं. दो वर्कर्स के बीच का कुछ मसला है तो वो भी ट्रेड यूनियन इसको हैंडल कर सकते हैं. ठीक है. एंड पहला रिलेशन हमने देखा बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज, दूसरा देखा बिटवीन वर्कर्स एंड वर्कर्स, एंड तीसरा होता है any restrictive conditions on the conduct of any trade or business. If there is any restrictive conditions on the conduct of any trade or business. Okay, so these three you have to remember. First of all, it may be temporary, it may be permanent. Okay, it may be temporary, it may be permanent. It can regulate relations between workers and employees. It can regulate relations between workers and workers. And in case of any restrictive conditions is put in the conduct of any trade or business, then also trade union can interfere. Okay. Then who is the appropriate government? For example, before that, see, for trade union, when there is a trade union, it has to be registered somewhere. Trade union. Who will? How do we say that this is a recognized trade union or this is a registered trade union? Tomorrow, anybody will say, and they will come in an organization and will say that I am a registered trade union. So for that, registration has to be done. For registration, there must be some body who will see if certain conditions are met. We have seen two conditions, that is 7 members or 10% of 100 workmen. If these conditions are met, then this particular body will ask them to sign some document and then registration would be done. So this body is known as the Office of Trade Union Registry. What is it known as? Office of Trade Union Registry. And the member who registers is known as the registrar of trade union. Registrar of trade union. Okay. So this registrar of trade union can be in the center or can be in the state. If like if the industry is belonging to state, or for example, suppose for central public sector undertakings, okay, like roadways, rail, banks, all the trade union will be registered at the central registrar. Okay, and for any other, all the registration shall be done at the state level. That means the state government would regulate this trade union, and for the central public sector undertakings and the example, for example, railway, ports, banks, all these are the center subjects. So industries related to that will be under the control of the central government. Okay, if that is clear, let us now understand. There are like hundreds of people, among them few, like say 10 to 12
say suppose among 100, 15 people forms the trade union. In 15 people, trade union. In 15 people, 5 people are primarily engaged in administration of the trade union. कि इसका seal क्या होगा, है ना? Letter लिखना है तो who will write the letter? These people among them, among these 5, one will be the head. He will sign the letter. Regulations होंगे तो जाकर के मीटिंग्स कौन अटेंड करेगा, ठीक है? तो all these 5 bodies were primarily involved in the day-to-day functioning and the administration of trade union are termed as executive. Okay, is termed as the executive. So we have understood who will regulates the trade union under center and state and what is an executive. Now from now onward, if I say an executive body, you should understand it is like from among the trade union who are primarily interested or in which the primary functions of administrations of the trade unions are are dependent. Okay, so there in each state there would be a registrar of trade unions. So the registrar of the trade union may appoint like the additional or the deputy registrar for its convenience. That may be the case. However, this registrar of trade union, why this is important? Because you have to go to him only for registering your trade union. If you fulfill the criteria of that 7 members or 10% or 100 workmen. Okay. So a group of people will go with the entire detail of their membership to this office and it will fill up the form. So the application, they will mention number one, what? Name and address of the union. Name and what is it name and where this union should be registered, either in Delhi or Bombay or Calcutta or Madras or Hyderabad, wherever. Name and address of the union. Number two, it should contain the name, address, occupation. Why occupation? I will tell you. Name, address, and occupation of the members of the executive, not entire members, but only the members of the executive. Executive, we have understood. Okay. So, name and address of the union, name, address, and occupation, what work they do of the members of the executive. And the third is rule or the governing constitution of the union. Key governing constitution. या रूल बुक, ठीक है? इसमें क्या लिखा होता है? इसमें लिखा होता है कि मेंबर्स की फीस क्या होगी, सेक्रेटरी कैसे अपॉइंट होगा, अगर ट्रेड यूनियन के बीच में मान लो अगर सेक्रेटरी रिजाइन कर जाता है किसको रिजिग्नेशन देगा, मतलब कि यूनियन को कैसे गवर्न किया जाए उसका एक रूल बनेगा, ठीक है? कितने मेंबर्स के लिए सर्कल बॉडी बनेगी, कितने मेंबर्स के लिए डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनेगी, ये सब चीजें ट्रेड यूनियन के रूल बुक में डिफाइन होती है, ठीक है? तो ये 3 चीज ले जाकर के रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन को बोला जाता है कि भाई हम रजिस्टर करना चाहते हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ये है, हमारा ट्रेड यूनियन ये है, हमारा जो इंडस्ट्री में इतने लोग काम करते हैं वो सारा डिटेल्स दे करके और वो रजिस्ट्री करेगी। तो एक बार जब ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार जो है वो एक बार चेक करेगा डिटेल्स और उसके बाद आपको रजिस्टर कर देगा। नाउ यू विल बी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। सी देयर इज अ डिफरेंस इन रिकॉग्निशन एंड रजिस्ट्रेशन, ठीक है? रजिस्ट्रेशन, registration is done by under the trade union act, under the trade union act, but recognition is not under the trade union act, it is under the industrial code, ठीक है? Registration is under the trade union act, but to recognize a trade union, that is not done under the trade union act, that is basically done under the industrial codes. Okay, so we have understood what is the trade union and how it is getting registered. So for recognition there is a separate process and that is basically done by the code of industrial relation 2020. Remember this. Okay, if there is a question that recognition of trade union is administered by there and there would be option of trade union act, not take that, the correct answer would be code of industrial relation 2020. Now
Previously, I have told you that earlier before the 1926, the trade union were considered as the criminal conspirator, but they after this enforcement of 1926 Act, they were given the rights and liabilities. So let us discuss what were the rights they were given and what are the liabilities of this. Rights. So they could be, first of all, they are given the legal status. Legal status is given to them. They are no longer unregistered or unrecognized. Legal status is given to them. And also, before where it was considered as a criminal conspiracy, no longer it will be considered as a conspirator, rather than immunity from the criminal conspiracy was given. Immunity from criminal conspiracy. Okay. Then immunity from civil suits. Immunity from civil suits. Okay. That means protection against the civil suit for act done in contemplations or furtherance of the trade dispute. ठीक है, यानी कि आप स्ट्राइक्स अप कर सकते हैं, यानी कि पीसफुल पिकेटिंग कर सकते हैं. We will see what are the different techniques that the trade union use and which of them are allowed and which of them are not allowed. So they are given as the legal status. They have the immunity from the criminal conspiracy, and they are like the immunity from the civil suits. Okay, you cannot sue the trade union for why they are going on this strike, because they are given the immunity from that. So also there is a some process that you have to like the strike should be allowed by the trade union. Individually, if you go on the strike, you could be sued in the court that why you were on the strike. But for the trade union, they are given as the immunity. Also, one point I forget to remember is that trade union, if they are the legal body, they are given the legal status. That means they can sue someone. Primarily, they sue the employer, and they can be sued. Somebody can also put a case against the trade union. Okay. So they can sue and they can be sued. Okay. Also now they are given the number four, they are given the right to administer property, administer property for the maintenance. That will they will have the right to acquire some property in the name of the trade union. They can take some building on rent. They will be given an office place in the within the industry. Like this type of rights they are having. Okay. So for the funds, now they every members there are members in the trade union. So these members will be donating some amount which is called as the subscription charge, say rupees 100 or say 200. So these funds, these collectively all the amount is deposited in a fund. So how they can spend these funds? These funds, first of all, this fund could be administered, like could be spent on the administrative expenses and salaries, salaries and administrative expense. सैलरीज ऑफ वो अगर वर्कर को तो ऑलरेडी पैसा मिलता है. कुछ ट्रेड यूनियन में कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जो बाहर से आप हायर किए होंगे ऑफिस वर्क के लिए, है ना. ऐसा तो नहीं है कि आप ट्रेड यूनियन का सारा काम वर्कर्स ही करेंगे. अगर ट्रेड यूनियन का सारा काम वर्कर्स करेंगे तो फिर इंडस्ट्री का काम कौन करेगा. तो ट्रेड यूनियंस को अलाउड होता है कि वो बाहर से भी कुछ वर्कर्स को ले सकते हैं, ठीक है ना. तो उनको सैलरी देने के लिए वो फंड्स का यूज कर सकते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मतलब ऑफिस का प्रिंटर, है ना, पेज ये वो स्टेशनरी, फिर इधर उधर जाना, मीटिंग्स होती है तो स्नैक्स वगैरह, इन सब के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए आप फंड यूज कर सकते हैं. आप लीगल प्रोसीडिंग के लिए यूज कर सकते हैं. प्रोसीडिंग्स, लीगल प्रोसीडिंग्स क्या होते हैं कि कंपनी के अगेंस्ट में कुछ पॉलिसी कंपनी ले गई, उसके अगेंस्ट में आपको फाइट करना है कोर्ट में. तो हमने देखा था लेबर कोर्ट्स होते हैं, और उसके बाद आप डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स में आप फाइट कर सकते हैं. उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है. वेलफेयर ऑफ मेंबर्स, वेलफेयर ऑफ मेंबर्स के लिए यूज कर सकते हैं. आपके मेंबर्स के वेलफेयर के लिए कोई बीमार पड़ गया, ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम्स हो गए, या आप चाहते हैं कि किसी अपने ग्रुप्स ऑफ मेंबर्स को आप ट्रेनिंग कर दें, कुछ कर दें, इसके वेलफेयर के लिए ना हेल्थ कैंप लगवा दें ऐसे. फिर लास्ट है कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट.
कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। कंपनसेशन क्या है? वही कभी कभी क्या होता है कि आपके मेंबर्स जो है सडन डेथ हो गया, एक्सीडेंट हो गया है, तो उस समय कंपनसेशन अमाउंट जो है एक फंड के अंदर एक फंड बनाया जाता है, उस फंड से आप कंपनसेशन या बेनिफिट पे कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस फोर specific types of expenditures that are basically can be done with the fund that has been collected. Salaries and administrative expenses, legal proceeding, welfare of the member, and compensation and benefit. Now, in the very beginning, I have told you that when registration of the doing the registration, the name, the address, and the occupation of the members of the executive are given to the registrar. Why this occupation? See, the occupation is given because the registrar would check that 50% of the office bearer, that is 50% of the executive members, must be engaged or employed in the industry connected with the trade union. 50%. Therefore, occupation is required. 50% of members 50% ऑफ द मेंबर्स कैसे होने चाहिए? जिस इंडस्ट्री का आप ट्रेड यूनियन बना रहे हो उस इंडस्ट्री में ही एम्प्लॉयड होने चाहिए। ठीक है, दैट इज व्हाई ऑक्यूपेशन इज रिक्वायर्ड। तो दिस इज वन मोर कंडीशन दैट इज यू हैव टू रिमेंबर। 7 members you have to remember, 100 workmen or 10% whichever is less, and then the occupation of the 50% of the members should be within the industry for which the trade union is getting formed। ठीक है, अब जब आपके पास इतना सारा फंड्स आ रहा है तो ऑब्वियसली आपको एक एनुअल स्टेटमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। एनुअल स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं एनुअल रिटर्न्स। ठीक है, ऑल दिस आर विद इन द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंदर डिफरेंट सेक्शंस है, उसको ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एनुअल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न आपको स्टेट सबमिट करना पड़ता है टू द रजिस्ट्रार। इसमें आप क्या क्या बताते हैं? इसमें आपको पूरा डिटेल बताना पड़ता है कि आपके पास कितने पैसे आए, है ना, कितना पैसा आपको रिसिप्ट हुआ और आपने कितने खर्चे कर दिए एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसके बाद आपके कितने एसेट्स हैं, आपने कहाँ कहाँ जमीन खरीदी, है ना, ऑफिस के नाम के लिए कहाँ ऑफिस नया ऑफिस खोला है, ट्रेड यूनियन के लिए, ये सारे एसेट्स, और आपकी कितनी लाइबिलिटीज है कि भाई कितने पैसे आपको पे करने हैं, दैट इज टू बी और दैट इज ऑल्सो यू हैव टू एनुअली सबमिट। देन आपका एक साल मेंबर्स में सडनली किसी मेंबर्स का डेथ हो गया या कोई मेंबर रिजाइन कर गया, तो वो मेंबर्स की जगह में ऑब्वियसली आप एक नया मेंबर्स को अपॉइंट करोगे। तो एक साल में आपका जो भी चेंजेस हुए हैं ऑफिस बेयरर में, ऑफिस चेंजेस इन ऑफिस बेयरर और रूल्स, आपके रूल्स में भी कोई अमेंडमेंट हुए हैं, तो वो सारी चीजें आपको बताना है एनुअली। ठीक है, तो एनुअल स्टेटमेंट के अंदर आपको क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है? एक तो आपका टोटल रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड चेंज इन द ऑफिस बेयरर रूल्स एंड the any executive was resigned or new addition of new members to the executive body, that is with respect to the trade union। now let us understand कि ट्रेड यूनियन आप क्या करें। एक तो होता है ट्रेड यूनियन का डिसोल्यूशन, इंपॉर्टेंट थिंग है। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मतलब कि अब ट्रेड यूनियन को हम डिसॉल्व कर देंगे। जैसे हमारा लोकसभा का सेशन डिसॉल्व होता है, वैसे ट्रेड यूनियन को हम एग्जिस्ट खत्म करना चाहते हैं, डिसॉल्व करना चाहते हैं। तो ये डिसोल्यूशन कौन करता है भाई? डिसोल्यूशन आपको मेंबर्स को करने पड़ेंगे खुद। ठीक है, बाय ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन खुद ही डिसॉल्व करेगा। ठीक है, खुद ट्रेड यूनियन डिसॉल्व करेगा, अपना रूल्स बनाएगा कि भाई हमने जो है इतने, हमारे पास अगर सारे मेंबर्स मान लो इसका कुछ अपना रूल्स है कि भाई ये है, इस अगर ये पर्टिकुलर सिचुएशन आएगा या अगर डिसॉल्व करना है तो इतने इतने मेंबर्स को हाँ बोलना पड़ेगा, या जो भी उसका एक पर्टिकुलर अपना रूल बनाया होगा उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रेड यूनियन को डिसॉल्व करेगा। और डिसॉल्व करने के बाद इसको जस्ट एक इंटीमेशन दे देना है, किसको? रजिस्ट्रार को, कि भाई हमारा ट्रेड यूनियन जो है अब से हमने डिसॉल्व कर दिया है। अब हमसे आप एक्सपेक्ट मत करना कि मैं ईयर एंड में आपको 3 स्टेटमेंट जमा करूंगा, क्योंकि मेरा ट्रेड यूनियन क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। ओके, इसलिए इंटीमेशन रजिस्ट्रार को दिया जाता है। रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाइड हो जाएगा कि ठीक है भाई चलो सिचुएशन इज एट पार एंड एवरीथिंग इज डन अकॉर्डिंग टू द रूल, तो आप क्या बोलेंगे कि ठीक है डिसॉल्व एक्सेप्टेड। देयरफॉर आपको जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप क्या क्या सबमिट करते हैं? नेम एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन, नेम एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द मेंबर और रूल बुक। अब आपके रूल बुक में और एनुअली अगर कोई चेंजेस करते हैं तो वो भी आप बताते हैं कि सर आपको जो हमने रूल बुक सबमिट किया था उसमें ये चेंजेस कर दिए।
तो जब आप डिसोल्यूशन की तरफ आते हैं तो रजिस्ट्रार आपके रूल बुक को देखता है कि भाई देखें आपका रूल में क्या लिखा है, आपने किस प्रकार से डिसॉल्व किया है। वो देखता है कि ठीक है आपने प्रॉपर अपने रूल बुक के हिसाब से डिसोल्यूशन किया है, तो बोले ओके खत्म खलास निकलो आप, है ना। दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है कैंसिलेशन। कैंसिलेशन का मतलब क्या होता है कि भाई रजिस्ट्रार खुद करता है कि भाई आपने जो है फर्जीवाड़ा करके ट्रेड यूनियन को रजिस्टर किया है बाय रजिस्ट्रार, ठीक है, कि भाई आपने जो है फर्जीवाड़ा किया है, हमारे साथ धोखा दिया है, आपने के पास जो है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं थे, आपके पास जो है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे, आपका जो है आपने जो 3 साल से आपने जो है रिटर्न नहीं सबमिट किया है, तो अब तो मैं आपका ट्रेड यूनियन को कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अगर ट्रेड यूनियन रजिस्टर कर कैंसिल कर देगा, तो फिर इस केस में भी आपका ट्रेड यूनियन सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रार मतलब उठा और खत्म कर दिया, नहीं। आप सबमिट नहीं करोगे रिटर्न तो भाई वो आपको नोटिस भेजेगा कि भाई आपने नहीं भेज सबमिट किया है, आप फिर भी नहीं करोगे, फिर भी नोटिस भेजेगा। फिर आपको एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि आप अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रख पाए, है ना। उसके बाद फिर जाकर के ट्रेड यूनियन का कैंसिलेशन हो, ठीक है। तो ये सारा डिटेल्स था ट्रेड यूनियन के बारे में फ्रेंड्स। हमने देखा कि ट्रेड यूनियन का रजिस्टर पहले क्या होता है, ट्रेड यूनियन है ना, व्हाट इज अ ट्रेड यूनियन। उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो है उसके सेक्शन 2 में, सेक्शन भूल जाओ, सेक्शन 2 के अंदर, सेक्शन 4 के अंदर रजिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल्स है। एग्जीक्यूटिव वगैरह सेक्शन 2 के अंदर आते हैं, ट्रेड यूनियन का डेफिनेशन इटसेल्फ सेक्शन 2 के अंदर आता है। तो ये सब चीजें हम भूल जाते हैं बेसिकली कि कौन से सेक्शन, इतना स्पेसिफिक तो नहीं आया कि सेक्शन का नाम लिखो, है ना। बेसिकली डिटेल्स आ सकते हैं क्या क्या होंगे। तो ट्रेड यूनियंस और रजिस्ट्रेशन वगैरह देख लिए, उनके राइट्स और लाइबिलिटीज हमने देख लिए, डिसोल्यूशंस देख लिया, और फंड्स कहाँ कहाँ स्पेंड कर सकते हैं, और एनुअल स्टेटमेंट सबमिट करना है, ये सारा चीज हमने आपको बता दिया। एक लास्ट पॉइंट बच जाता है जो कि पेनाल्टी, जो कि ट्रेड यूनियंस पे लगते हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया कि अगर आप एनुअल स्टेटमेंट नहीं सबमिट कर रहे हो तो आपको 2 साल 3 साल के बाद आपको हो सकता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दे। लेकिन सेम ईयर, जिस ईयर आपने नहीं सबमिट किया उसके ऊपर आपको पेनाल्टी लग जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो कैसे पेनाल्टी क्या है, अगर आप सबमिट रिटर्न करना भूल जाते हो, है ना, इफ यू फेल टू सबमिट द रिटर्न्स, तो पेनाल्टी कैसे लगती है, बहुत ही कम, ₹5, ठीक है, अप टू ₹5 पेनाल्टी लगती है। और उसके बाद एडिशनल ₹5 पर वीक, कि भाई अब इस साल आपने बाई 20th में आपको रिटर्न सबमिट करना था, आपने नहीं किया, तो आपके ऊपर क्या रुक गई, ₹5 की पेनाल्टी। अब उसके बाद मई के बाद जितना वीक आप डिले करोगे उतना वीक ₹5 ऐड कर लो, ठीक है। तो ये एक पेनाल्टी हुआ। उसके बाद दूसरा पेनाल्टी आपका ये है कि अगर आपने जो रिटर्न किया है उसमें फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दिया, फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दिया, तो उसमें आपका क्या होगा, ₹500 की पेनाल्टी लगेगी। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है, एक रिटर्न सबमिट करेंगे तो उसमें ₹5 की पेनाल्टी है, और फॉल्स इन्फॉर्मेशन पे ₹500 की पेनाल्टी है, ठीक है। ट्रेड यूनियन में अभी तक 2 अमेंडमेंट हो चुके हैं, देर आर 2 अमेंडमेंट्स अप टिल नाउ। नंबर 1 वाज डन इन 1947, और ये सोचा गया था कि ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रेशन के साथ साथ रिकॉग्निशन भी दिया जाए विद इन द ट्रेड यूनियन एक्ट इटसेल्फ। बट ये कभी इन्फोर्स नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी रिकॉग्निशन हम कहाँ देते हैं, इंडस्ट्रियल कोड ऑफ रेगुलेशंस। दूसरा 2001 में हुआ अमेंडमेंट, जहां पर हमने बोला कि 7 मेंबर्स वाले क्लॉज के साथ ऐड किया क्या, 10% और 100 वर्क में, जो हमने ऊपर देखा, ये अमेंडमेंट 2001 में हुआ, ठीक है। तो ये 2 अमेंडमेंट्स भी याद रखना है। तो फ्रेंड दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू लाइक द ट्रेड यूनियंस, एंड आई थिंक कि अब कुछ बचा नहीं है, लेट अस गो थ्रू द नोट्स एंड एक बार देख लेते हैं ट्रेड यूनियंस के अंदर क्या क्या है। फंक्शंस, प्रोटेक्टिव फंक्शंस, मिटिगेटिव फंक्शंस के डिटेल्स तो आएंगे नहीं, क्योंकि राइट्स देखो, इम्यूनिटी फ्रॉम द सिविल एंड द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चार्जेस, लीगल रिकॉग्निशन एंड प्रोटेक्शंस अंडर द लॉ, ability to maintain funds and property, right to represent members in industrial disputes, and recognitions by the employer for bargaining, ठीक है, if majority। Trade Union Act provide for registration and not automatic recognition, that we have already seen, recognized and governed by the Code of Industrial Relations 2020,
51% membership sole negotiating union else multiple union negotiating council। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर आपके पास 51% ऑफ मेंबरशिप है तो आप सिंगल यूनियन जो है वो पूरे एंटायर इंडस्ट्री को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 51% मेजोरिटी है, 51% मेंबरशिप है ना। तो बोलते हैं इसको मेजोरिटी यूनियन, दैट इज कॉल्ड द मेजोरिटी यूनियन। तो अगर आप मेजोरिटी यूनियन है यानी कि आपके पास 51% ऑफ द इंटायर जो वर्कफोर्स का मेंबरशिप है, तो आप सिंगल हैंडेडली आपको ही इंडस्ट्री बुला करके सारे डिस्प्यूट्स के अंदर आपका ही डिसीजन माना जाएगा। आपका डिसीजन मतलब कि रिकमेंडेशंस माना जाएगा। और अगर आपके पास 51% नहीं है तो दो यूनियन को मिला करके, तीन यूनियन को मिला करके सब बैठेंगे और ऐसे केसेस में दो तीन यूनियन का आपस में जब सहमति होगा कि हाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम तीनों यूनियन एग्री करते हैं, तो जाकर के आपकी तीनों की बात को, रिकमेंडेशंस को आगे एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। Problems of the trade union not required. Measures of strength of the trade union not required. Role of the trade union in industrial relations. Trade union under the Industrial Relations Code. Role of hierarchy. ठीक है, okay. This is all with the trade union, which I have explained. So, in the next video, we will start with the Industrial Dispute Act, and we will see what are the different the different techniques that the trade union use. Like we have the strikes, we have the different categories of a strike. And then there is a demonstrations, different demonstrations. So, what are the legal techniques that could be used by the trade union? What are illegal techniques that we will see? So, thank you very much for having patience and listening to me. We will meet in the next video.